A very good afternoon, students. We'll be starting the session right at 40. We'll be waiting for a couple of more students to join and then we will start. Students, within next 3 minutes, we'll be starting the session. Um, our guests have already joined. So yeah, without any further delay, we will start it at sharp. Within the next 3 minutes, we'll be starting the session. All right, I think I can see a decent number of students have already joined. So, without any further ado, I think we should start the session, right? If may I ask you, Miss Pooja, can we start the session? All right. So, Dr. Puneet, are you there with us on the call? Hello, yes, I'm here only. Okay, okay. So all right. So very formal good afternoon to each and every one of you, and especially Dr. Puneet, thank you for being here with us for this exciting expert talk. I'm delighted to welcome you all to this expert talk as a part of Abhyuday. So before moving ahead, I would like to introduce myself. My name is Falguni Dikshit, and I am currently handling communications and social media at Center for Distance and Online Education, Vivekananda Global University. As someone deeply passionate about education and innovation, I'm thrilled to be moderating today's session where we will explore how screen time affects our vision and how we can keep our eyes healthy in the digital learning era. So before any further ado or anything else, as I can see many students are already furious to deep dive into the session with our today's guest, I would like to formally welcome you, Dr. Puneet. And students, I would like to introduce our guest of the honor today, Dr. Puneet, a pioneer in vision care, innovation, and entrepreneurship.
Dr. Puneet holds dual medical qualification in naturopathy, yogic sciences, and optometry, allowing him to merge traditional wellness with modern eye care. He is also the co-founder and CEO of Curesi, which has been featured in Shark Tank India season 2 last year, I guess, and where he led the development of the world's first AI-based vision therapy software, revolutionizing treatment for amblyopia, lazy eye. He also serves as a medical director at Cure for Eyes, a chain of AI integrated super specialty eye care clinics. Dr. Puneet has been recognized as a mentor at Niti Aayog, Government of India, contributing to national healthcare innovation. His work has earned multiple prestigious awards, including recognition from Government of India, Innovation Mission Punjab, and the ZS Prize. Many of you might have also seen him on Shark Tank India season 2, as I have already mentioned, where he made history as the first optometrist to showcase vision therapy on the international platform. Dr. Puneet, we are honored to have you here with us today. And I open the stage for you for today's topic. And I'm sure students and all the learners present here on this call that you will be having a very great time with him. He's like such an amazing combination of an optometrist and an entrepreneur and a lot. He's also a very young entrepreneur that everyone, I guess even including me, I always, whenever I look up to him, ever since we I met him for the first time in 2021, I always desire to be someone like him. At such a young age he has achieved such great achievements, and I'm delighted to have such a great friend and a mentor. I must say he has always been there for me and has guided me across various paths in my life. So Dr. Puneet, the stage is yours now. Thank you so much for introducing me this beautifully, as beautiful as you are. So, hi everyone. I hope you had a good lunch today. Just to confirm, is everybody free to write anything in the chat box? या कुछ ऐसी restrictions तो नहीं है कि they can't write? Let me check with the tech team quickly. Ma'am, can everybody write? Yeah, sure. क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ना सेशन को इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, so that students Definitely. if they interact with me, तो मुझे थोड़ा सा बेटर आइडिया आएगा कि यार यंगस्टर्स क्या चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, उसी तरह की चीजें मैं उनको बोलूँ. ठीक है. अब उनकी स्लैंग्स तो ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे. थोड़ा बहुत मैं कुछ सिखाने की आपको कोशिश करूंगा. सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत. आई एम the co-founder and CEO of CureC and also handling Cure for Eyes. Just give me a moment. I'm sharing my screen right now. I hope it's visible to everyone. Just confirm once and I'm done. Yes, you are. Okay, perfect. सो ये जो अभी आज का सेशन है, इसको हम मिक्स रखेंगे इन इंग्लिश एंड हिंदी. अगर स्टिल आप में से किसी को कोई भी इशू आए समझने में, तो मुझे एक दो भाषाएं और आती है, मैं ट्राई कर लूंगा. बट आप चैट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि क्या आपको इशू आ रहा है. ठीक है. आशीष हैड लंच एक्सेलेंट. ठीक है. बाकी सबने आई थिंक नहीं किया होगा अभी. एनी हाउ, माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज कि क्या आप अभी किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ज्वाइंड है या फिर किसी मोबाइल फोन के थ्रू? आप फटाफट से 10 सेकंड के अंदर एक बार ये चैट बॉक्स में मुझे बता दो. डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एक वोट. ओके, फोन. क्या बाकी लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया? क्या वो टाइप ही नहीं कर रहे हैं? ओके, परफेक्ट. ठीक है. तो आपके अगले कुछ मिनट जो होने वाले हैं, उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं, क्यों बचाना चाहिए, क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे. कंसिडर मी लाइक योर बिग ब्रदर. तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. आप कोई भी इशू हो या कोई भी इस सेशन के अलावा भी डाउट लगे तो आप पूछ लेना. बस मैं बता नहीं पाऊंगा शायद वो वाले, पर इस सेशन के डाउट जरूर आपके क्लियर करेंगे आज. अभी अगर बात करें तो आज का टॉपिक हमारा है सर्वाइविंग स्क्रीन टाइम एंड कीपिंग योर विजन शार्प इन द डिजिटल लर्निंग एरा. वाई डिजिटल लर्निंग एरा? क्योंकि आप सब लोग एक ऐसे टाइम में हो कि यहाँ पर ना सारी चीजें डिजिटलाइज है. डिजिटल इंडिया है ऑब्वियसली, पर
यहाँ पर आप जितने भी डिवाइस, आप सुबह उठते उठते सबसे पहले आपने अपना फोन यूज किया, थोड़ी देर बाद आप लॉग इन करते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और रात को सोते टाइम इंस्टाग्राम देखने तक आप एक फोन या किसी स्क्रीन के सामने हो। बीच में एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप मूवी देखने गए हो, या फिर आप अगर घर पर भी मूवी टीवी में देख रहे हो, लेट्स से आप अगर कुछ और किंडल पे आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो पूरा टाइम आप डिजिटल स्क्रीन्स के सामने हो। अब हम स्क्रीन्स को देख कैसे पाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर आईज। लेकिन अगर हम अपनी आईज का ही ध्यान नहीं रखेंगे, वी डोंट केयर अबाउट आवर आईज इटसेल्फ, तो हमें आगे चल के इश्यूज हो सकते हैं और ये सारी स्क्रीन फिर हम देख भी नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स, कुछ हैक्स बताऊंगा, वो आप फॉलो करने का ट्राई करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको दो, मेरे बारे में दो चीज़ें बताई। फर्स्ट इज की क्योरसी विजन थेरेपी एक चीज़ है कुछ, वो शार्क टैंक पे भी आई हुई है और उसी को मैं हेड करता हूँ मेनली। अभी वो एफडीए सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। आप में से जो यंगस्टर्स, आई होप कुछ इसमें से ऐसे लोग होंगे जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे। आजकल तो वो एक फिल्टर भी चल रहा है चैट जीपीटी पे, जो बड़ा कॉमनली हर कोई यूज कर रहा है। Now, about QC, it's an AI-based vision therapy software that is treating amblyopia और lazy eye। एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्म है amblyopia, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को देखने में ब्लरी दिखाई देता है। अब वो जो ब्लरी विजन है, किसी भी चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंस, दवाई, दैट इज मेडिसिन, या फिर कोई भी सर्जरी से हम उसको क्योर नहीं कर सकते। देयर वाज नो क्योर टू इट, इट वाज इनक्योरेबल अर्लियर। बट 6 years बैक, मी एंड माय स्कूल फ्रेंड जतिन कौशिक, हु इज नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम दो लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसा डेवलप किया कि बच्चे या फिर वो जो पेशेंट्स हैं, बी इट इन अडल्टहुड एज वेल, within a few months of playing simple games, which are obviously exercises at the back end, they can improve their eyesight and they would become able to see clearly. Now that thing is called QC vision therapy. It's recognized globally and we are running at all the major eye care centers, AIMS, IQ and whatnot. So it's obviously a non-surgical treatment. We ask the patient to play some games which are backed by various sciences. We are backed by researches, evidences, patents. As I mentioned, all the leading eye care centers are nowadays using QC and they are one of our clients. But ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्या करता हूँ। बट आज मेरा आपसे एक सवाल है, आर वी रियली गेटिंग स्मार्ट? मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था कि आप लोगों ने फोन से ज्वाइन किया है या फिर आपने किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से ज्वाइन किया है। आई थिंक 50-50 हुआ है यहाँ पर। काफी लोगों ने फोन से ज्वाइन किया, काफी ने लैपटॉप से। सुनीता इज आस्किंग टू कीप इट इन इंग्लिश। ओके, श्योर, आई कीप इट इन अ मिक्स, आई विल रिपीट द सेंटेंसेस। No worries. Myself, as I mentioned, I am the co-founder and CEO of CureSy, which is a vision therapy providing company, and we were the first one to at least invent some kind of cure for amblyopia, which is an eye disease where the patient is not able to see clearly, even though he gets the best glasses, contact lenses, medicine, or surgery. There was no cure to it. So we provided the cure where the patient has to play simple exercises which are gamified, and via them the patient can improve within a few months of just exercising on any computer or laptop. But the main motto for me, the main motto of this meeting today itself is about, are we really getting smart? So I've asked you earlier that whether you are using a mobile phone or a desktop right now for this meeting, and I think half of you replied with desktop, where the other half replied with the phone. The reason I was asking is, to the phone users and even to the desktop users, I think you are holding your phone something like this or like this, right? Now, if you bring both of your hands closer and then you see, so there's obviously a dent on the hand which you are using right now for your mobile phone. So मोबाइल फोन ने हमें क्या दिया? अगर आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो, आपको आपकी जो पिंकी फिंगर है, जो सबसे छोटी फिंगर होगी आपके मोस्ट प्रोबेबली राइट हैंड में, उसके ऊपर एक डेंट आ गया होगा कंपेयर टू द पिंकी फिंगर ऑफ योर अदर हैंड। जस्ट एक बार ये करके देखो, अगर मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताना ऐसा है या नहीं है। यस यस, नो, यस 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 यस। गुलशन के नहीं है, गुलशन कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम गुलशन, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर रिप्लाइंग विद यस। कंग्रेचुलेशन गुलशन, आप बच गए हो।
Okay. So now, as you saw, are we getting smarter, or is the smartphone or the screens taking over? So I believe the screens are taking over, but we also have to keep a balance of our healthy life as well as the screen. So आज हम बात करेंगे vision therapy. We are going to talk about vision therapy today. The human eye, the eyes by which we are able to see everything, they are not designed for screen exposure. Okay, if a child is born today, he's not designed for screen exposure. He's designed to live his life out. He is designed to live with good gardens, beautiful sceneries, to view all the good landscapes of this world. But we have our own limitations. We have our own commitments, due to which we have to obviously look at some of the screens, either at the time of socializing or at the time of learning, and even during employment itself. We have to look at various screens, be it for Excel, be it for this Zoom meeting, and be it for any other activity. Even irony is कि ये meeting भी एक screen पर ही हो रही है. So obviously we can't avoid the screens. The good point here is we have to adapt. We have to adapt in a better way so that we use the screen, but still we are not affecting our health. So to do that, obviously I'll be teaching you some tips and tricks, but the main thing is increase near work activities. Whatever we are doing at near, be it reading a book or looking at a screen or mobile phone or tablet, computer, everything is at the near only. So our eyesight or our vision is limited to the near part. That is why myopia is rising. Myopia is having your glasses or spectacles power in minus, and it's basically a global epidemic right now. So the thing is, you have to utilize your eyes to keep seeing at near as well as at distant objects. अब आपको दूर भी देखना है, नजदीक भी देखना है, ये फोकस स्विच को भी रखना है, बट ये सब होगा कैसे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. As per the WHO reports, over 2.2 billion people globally, they have vision impairment. But if we treat our eyes rightly, we can cure them for sure. Now, what is vision therapy? It's obviously a non-invasive customized program which is designed to improve your vision. This is the simple definition for it. Otherwise, you can say that you can improve visual skills, coordination, and the processing which is happening at the brain. To simplify it even further, it's basically the coordination of your eyes and your brain. Now, it helps retain the brain and eyes to work better together, obviously. Eye muscle training is a part of vision therapy, hand-eye coordination. All of your sports persons, be it Virendra Sehwag, be it Sachin Tendulkar, Virat Kohli, everybody goes through hand-eye coordination training. Now, the third one is depth perception and 3D vision. Whether you are playing cricket, whether you are just climbing the stairs, your depth perception is playing a part. So depth perception comes up whenever both of our eyes are getting utilized. One eye is focusing via this angle, whereas other eye is providing me another angle of the same thing. This makes me appreciate the depth of the object, whether it's at front or at backwards. Then neuroplasticity based exercises, some specialized exercises are there, which basically are helping me to improve the coordination between my eyes and brain. Now, all of a sudden, why is this a very big deal? As I mentioned, 1 in 5 children are suffering from convergence insufficiency, simplifying eye strain, but they're still undiagnosed. 80% of the learning, whatever you learn, 80% of learning is happening through vision. But uncorrected issues, they can obviously impact your academics as well. If you're not able to see clearly, if you're having some kind of haziness, even a bit of eye strain if you're having, that will turn into headache very soon. And will obviously ask you to stop reading or to stop using screens for prolonged time. But that's not the case if you treat it correctly. If you visit an eye specialist, or even if you ask the doubt to me in this meeting, I can help you out. But you have to speak up for this, and you have to identify whether you are facing the issue or not. Adults are also suffering, not just the children. Increased screen time is again one of the biggest cause for this, but it has greater convergence fatigue. That is a clinical term, but to simplify, having issues at focusing at something comes under convergence insufficiency.
Now, these are some of the common conditions which require vision therapy. As I mentioned, convergence insufficiency, that is weak eye coordination for near vision tasks, either screens, books, or anything else. Amblyopia, the thing that we were curing, as I mentioned, no, it was incurable earlier. That is amblyopia. So amblyopia के अंदर reduced vision होता है because of improper brain and eye connection. Then strabismus, strabismus stands for crossed eyes. You must have seen people जिसमें थोड़ा सा तिरछापन होता है, उनकी दोनों आईज परफेक्टली अलाइन नहीं होती है, उसमें भी विजन थेरेपी से उन पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है. Apart from that, we have digital eye strain, the topic for today. So digital eye strain because of computer, so that becomes computer vision syndrome. I'll give you tips. Just stay tuned to this presentation. यही boring part है, इसके आगे जो आएगा ना वो interesting होगा, ठीक है? So there might be headaches, dry eyes, discomfort from using the screens, everything included within digital eye strain. Now, here comes an interesting thing. Test your own NPC. NPC stands for near point of convergence. So near point of convergence अगर मैं आपको समझाऊं, आपको एक पेन लेना है. I hope all of you have a pen nearby. Just confirm once in the chat box. आप सबके पास अभी एक पेन है? Do you have a pen in front of you? Yes, 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 yes. Okay, perfect. Just follow as I do. आप अपने पेन को अपने आई लेवल पर रखें और एक आर्म के डिस्टेंस पर. Just keep your pen at an eye level and at a distance of 1 arm length. Then from the very extended arm, from this distance, you have to slowly start bringing it up near to your eyes while focusing at the tip. Just keep focusing at the tip and bring it very, very near to your eyes. There will come a moment where you won't be able to see it clearly. It will be very, very blurry. Just try to do it once. कोई फॉलो कर रहा है इसको अभी? सर आई पर प्रेशर आया, somehow blurry, yes. ओके. हाँ, तो जो अभी आपकी आई पर प्रेशर आया या फिर आपको थोड़ा सा ब्लरी हुआ, आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली आप एक आर्म लेंथ से आई लेवल पर रखते हुए इस पेन को दूरी से नजदीक लाएंगे, इसकी टिप पर देखते हुए, तो एक मोमेंट पर ये ब्लरी हो जाएगा. बट वो जो मोमेंट है, वो जो टाइम है जहां पर जिस डिस्टेंस पर ये ब्लरी हो रहा है, आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अगर रिपीट करते हैं कई बार, जैसे दिन में आप इसको 6 या 7 बार करते हैं, तो आफ्टर अ फ्यू डेज ये डिस्टेंस यहाँ से हटके यहाँ हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपली योर आईज आर इम्प्रूविंग. तो ये आपको करना कैसे समझ आया? टू द इंग्लिश पीपल आई रिपीट वंस, यू हैव टू कीप दिस पेन at your eye level, extend your arm and slowly bring it closer while looking at the tip. You have to focus at the tip of pen till it becomes very, very blurry. Now this point where it's becoming blurry, you have to repeat this particular exercise at least 6-7 times per day. After a few days, you will notice this point, instead of here it becoming blurry, it will become blurry after a while. So this point or this distance should be reduced now. It became blurry at a distance of 3 inches from the eye, okay? Then you have scope of improvement, Ahmed Aman, MCA. See, ideally ये जो distance होना चाहिए जहां पर ये blurry हो जाए, that should be within 6 to 10 centimeters. 6 से 10 सेंटीमीटर के अंदर ये blurry point आपका आना चाहिए, ठीक है? इवन कुछ केसेस में तो टिप ऑफ द नोज होता है, यहाँ पर आ गया, फर्स्ट फिर पेशेंट को क्लियर दिख रहा है. दैट इज एक्सेस, कन्वर्जेंस एक्सेस, कि आपकी आई ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग हो गई है. आई होप ये सबको समझ में आया, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Just let me know if everybody has understood. Yes, yes, yes. Okay, perfect. आप लोग तो बड़े अटेंटिव हो यार, मैं तो खाना खा के इतना अटेंटिव नहीं रहता. I can understand. Okay. Okay, so moving to the next part. Understanding digital eye strain first. So
As I mentioned, digital eye strain is a result of prolonged screen usage, be it computer, laptop, tablet, or any name that you provide to it. But whenever you are using screens for long, it will give you an eye strain in after a while. So the symptoms are dry eyes, headache, blurred vision. I think some of you might be already instilling some kind of eye drops on a daily basis. आप में से कुछ लोग अभी भी डेली कुछ तो आई ड्रॉप डालते होंगे, चाहे वो बाबा रामदेव ने बताया हो या किसी ने भी आपको बताया हो, कोई ना कोई होगा आप में से. सी यस, अमोक्सी, यस. सो गाइस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज आई ड्रॉप्स, अगर आप ये मेरे कुछ टिप्स को फॉलो कर लोगे तो मे बी आपको आई ड्रॉप्स की जरूरत ना पड़े. So the causes, as I mentioned, prolonged screen exposure and poor posture of sitting as well. जैसा कि मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि आप फोन पे लॉग्ड इन हो या किसी कंप्यूटर या टैबलेट पर. रीजन भी पता है क्या होता है? फोन हम स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं, होते 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 हम धीरे धीरे यहाँ घुस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. स्पेशली जब आप रील देखते हो, ठीक है, बड़ा कॉमन है ना. इसके लिए ये मायोपिया इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा एक आई कैन से डिसऑर्डर है कि जिस वजह से अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने एक फीचर डालना शुरू कर दिया है. अगर आप स्क्रीन डिस्टेंस को आप वहां पर सेट कर लेते हो, तो अगर आप इस आर्म लेंथ से ज्यादा नजदीक लाओगे तो ऑब्वियसली वो स्क्रीन आपको ऑन करेगा कि पीछे लेके जाओ तभी चलेगा ये. अगर आपके स्मार्टफोन में वो फीचर है तो उसको ऑन कर लो. अभी मत करो, इस सेशन के बाद कर लेना, पता चले मीटिंग ही छोड़ गए, अगली टिप्स तो आपकी रह जाएगी फिर. I believe children are getting dumber primarily because can be the dumb stupid cartoons we have today for children where in 19. हाँ भाई हाँ, ठीक है, मान लिया आपकी बात. अहमद, आप मुझे कार्टून सजेस्ट कर देना. अभी एक बार मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया, मैंने आपको स्क्रीन्स के बारे में कुछ बताया है? यस सर, ओके, परफेक्ट. So as I mentioned, there's nowadays a setting in your mobile phone or smartphone where you can set the screen distance, and then if you're bringing it closer, obviously the screen will show some kind of a warning to warn you from using it. Oh, sure. So the next is 20-20-20 protocol or the 20-20-20 rule. So what it means is whenever you're sitting for a long period of time, whenever you're using your screens, either you're in class or you're working in Excel or doing any kind of work on a screen, whenever it's around 20 minutes, look at something 20 feet or far away for 20 seconds and then come back and rejoin your work. 20 seconds break is not a big deal whether you're doing anything in the world. Okay, so you have to just take a break for 20 seconds, look at something 20 feet or far away. If you can't measure 20 feet, obviously look at something which is at a distance, either out of the window, out of the door, at the corridor, anywhere, and then you can again start looking at near. अगर मैं आपको और सिंपली समझाऊं तो मैं अपने हाथ को ऐसे उठाए रखूंगा तो दर्द होगा, राइट. लेकिन अगर मैं इसको हर 10 मिनट में एक ऐसे 20 सेकंड का ब्रेक दे दूं और फिर इसको उठाऊं तो दर्द नहीं होगा. सिमिलरली आपकी आई ने भी नियर फोकस किया हुआ है, अगर आप उसको एक बार डिस्टेंस फोकस करा करके वापस ले आओगे तो उसको इश्यू नहीं आएगा. आपको आई स्ट्रेन और हेडेक आपका बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा अगर आप ये फॉलो करते हो तो. So in every 20 minutes, look at something 20 feet far away just for 20 seconds and you'll be relieved from eye strain at a hell lot of extent. Then it obviously it's reducing eye strain and it's refreshing your focus as well as your mind will start appreciating this break. Now it's very easy and effective for the daily screen users, that is you guys. Coming to the next one, blinking and the other eye exercises. आपको पता है आप सबको जब आप स्क्रीन्स देखते हो तो आपको ज्यादा ब्लिंक करना चाहिए. All of you should blink more often whenever you're using screens. Why? Because all our eyes are built in something like this, and इसके ऊपर एक layer होती है tears की. There's a tear layer over your eyes which gets evaporated the more you're using the screen. अगर जैसे कि मैं पानी रखता हूँ उसके ऊपर लाइट जला देता हूँ तो जल्दी इवेपोरेट होता है ना. सिमिलरली अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और मेरी आई उसको देखे जा रही है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा.
मेरे आईलिड बस उसको स्प्रेड करते हैं सरफेस पे, बट उसकी इवेपोरेशन को नहीं रोक सकते। सो टू स्टॉप दैट इवेपोरेशन, आपको जितना ज्यादा ब्लिंक करोगे उतना ज्यादा टाइम वो क्लोज हुई ना, तो बेटर है अगर आप टीयर्स को स्प्रेड रखो सरफेस पे और उसको इवेपोरेट होने से उतना बचा सको। आशीष इज आस्किंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन myopia? Yes, my dear friend, after this presentation, I'll completely explain myopia to you. It will take roughly 5 to 10 minutes. मैं बहुत सिंप्लीफाई करके वो आपको बता दूंगा। अभी आपको ये समझ में आया कि जब भी आप स्क्रीन यूज करते हैं, आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा ब्लिंक करें, ताकि इवेपोरेशन कम हो आपकी आई के ऊपर जो टीयर्स की लेयर है उसका। So you have to blink consciously to avoid dry eyes, as I mentioned. Then the second one is palming. आपको ऐसे हैंड्स को रब करना है, और रब करने के बाद जब थोड़ी सी हीट इसमें से जनरेट हो तो आपको ऐसे हाथ, आप अपनी आंखों पर हाथ रख सकते हैं। अभी आप करके देखो, आपको थोड़ा सा मजा तो आएगा, रिलीफ तो आपको मिलेगा। और कोई अगर स्क्रीन पर करके दिखाए तो मैं भी उसको देखूंगा। नहीं, nobody is daring enough to do it on the screen. From the teachers or the management, anyone? Hello, I hope I'm audible to everyone. Yes, yes, you are audible, and we have already done that. Okay, perfect. But I would like to ask the tech supports team to do that on screen, because they are the one who are actually involved into so much technical and computer screening time. So, ma'am, can you please help us with a demo that whatever sir has taught about rubbing hands and putting it over the eyes? तो फाल्गुन मैम तो किसी और को फंसा के चले गए हैं। एनी हाउ, All right, sir. All right, sir. So I'll try whatever. I mean, I haven't heard what you have said before because I was busy somewhere. What is that? Dry eyes. Rub hands and place over closed eyes. Okay. Okay. What else? So the main question was that, do you find it helpful? No. तो द स्टूडेंट्स, आप सब ट्राई करके देखना। Relax on eyes. My eyes often, most often get wet or moist while looking for a long time to screen. That is because your eyes are secreting more tears to compensate for this evaporation. Eyes got blurry for 4 5 seconds. It feels the same black dot as I have looked at the sun. Okay, and by saying it's working, perfect. See, my only reason behind this exercise was to keep you guys engaged and to make you learn about new things or new habits that you can make for keeping yourself healthy. Apart from palming, you can try to roll your eyes. These are some of the directions, like left, right, up, and down, that you can do. Just give me a moment, I'll join. Hello, everybody. I hope I'm audible to you now. Yes, yes, you are audible now. Sudden no issues. So I was mentioning about rolling and focusing exercises improve your flexibility. Basically हमारी eyeball होती है, उस eyeball को 6 eye muscles होती हैं जो hold करके रखती हैं,
एंड इसको अलग डायरेक्शंस में मूव करा सकती है. देयर आर 9 gazes that you can look into, and there are 6 muscles which make your eyes move in different directions, either being left, right, up, down, and diagonals. So what you can do, first thing, you can move your eyes to the right and left. Second, you can roll your eyes clockwise and anti-clockwise. Then you can move your eyes downwards, upwards, and then you can create infinity as well. These are some of the common eye exercises which you can perform to keep yourself healthy. But be assured कि सिर्फ ये एक्सरसाइजेस करने से अगर कुछ ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, कुछ कोई बड़ा डिजीज है, वो डिजीज ठीक नहीं होगा. वो कंडीशन अब हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइजेस करने से आपका कैटरैक्ट या मोतियाबिंद ठीक हो जाए, या कोई भी दूसरी कंडीशन भी, रेटिनल इशू, वो सब ठीक हो जाए. उन सब के लिए आपको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. Not just the optical part जहाँ पर लिखा होता है free eye test. They are not the people who diagnose you with diseases. You have to go to any eye hospital or to go to any clinics where they'll be diagnosing you after assessing you on a multiple parameter basis. I'm constantly looking at the chat box as well. It's working. Yes, yes. I think these are really helpful tips, and I will definitely adapt. Number of both my eyes are different, and one I can see less, and with the other I can see even less. So whoever it is, Misu, then I think you might be having amblyopia. Just get it checked once, and I'll be helping you out after you send me the prescription of whatever you're diagnosed with. Due to work demands, we often focus for 4 to 6 hours or more without breaks, unintentionally neglecting rest. This leads to eye strain and discomfort, but avoiding prolonged screen time is not always possible. Could you suggest effective ways to relieve eye fatigue while maintaining productivity? Your guidance in such situations would be really appreciated. Okay, so वही मैं mention कर रहा हूँ यहाँ पर. First thing is 20-20-20 rule. So whenever you're working for longer hours constantly at the screen, just try to take this break in every 20 minutes. You can sneak out 20 seconds easily. Apart from this, keep blinking more and try palming as well as rolling exercises. Now, after this is one of the most important issue or most important thing that you guys often forget. This is about the sitting ergonomics. मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि आप कोई मोबाइल के सामने हैं या फिर आप किसी कंप्यूटर या पीसी के सामने हैं. I think most of the guys who are using mobile phones are using in hands, and either वो अभी लेटे हुए होंगे, खड़े होंगे, फोन पर बात कर रहे होंगे, किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, right? But the ideal condition or the ideal position for you to use a screen should be something like this, as displayed on the screen. आपको एक आर्म लेंथ दूर पर एक मॉनिटर या फिर आपका कंप्यूटर या इवन लैपटॉप को भी आप ऐसे ही रखिए. हम में से कई लोगों की आदत होती है लैपटॉप को लेकर के हम लेट ही जाते हैं, अपने ऊपर रख लेते हैं and whatnot. So always sit at an arm length from the monitor, and even if it's a laptop, just keep it at a distance of arm length. Secondly, sit or make the screen at your eye level. ऐसा नहीं होना चाहिए आप स्क्रीन को हमेशा ऐसे देख रहे हो. अदरवाइज अभी आप लोग जब इवन मैं भी जब हम रोड पर चलते हैं ना, तो हमारे फोन की आदत तो जाती नहीं, तो हम ऐसे चलते हैं हमेशा, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बेंड होते जा रहे हैं. तो हमें ये वाली इवोल्यूशन नहीं चाहिए कि हम हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी वो सब ऐसे ही रहें. इसके लिए ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, एडजस्ट योर चेयर हाइट, एंड देन keep your monitor or your laptop at your eye level. This is the best condition which makes it less stressful for you to sit in front of a screen for longer hours. Also, आप अपने चेयर की कुशनिंग हाइट वगैरह उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि आपको थाई सपोर्ट मिले. Your legs should not be tired when you're sitting, right? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड फैक्टर भी यही होता है. हम बाकी सब कुछ फॉलो कर लेंगे, हम ड्रॉप डाल लेंगे, दुनिया भर की दवाई खा सकते हैं, पर हम ये फोकस करने के लिए रेडी नहीं है या फिर ये सेट करने के लिए अभी रेडी नहीं है. आई थिंक not just for me, not just for the teachers, for you guys, the learners, I think you have to sit for longer hours and you can't avoid that thing, but maintain something like this. Maintain a study position where you have a chair, you have a table on it, there you place either monitor or your laptop, and then this is your workstation. आप अपना एक वर्क स्टेशन जरूर बनाओ यार. आप अपने स्नीकर्स पसंद के लो ना लो, कोई बात नहीं,
कहीं से पैसे इकट्ठे करके एक वर्क स्टेशन जरूर बनाओ, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ लंबे टर्म में बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, अगर आपकी अभी से सिटिंग पोजीशन है या फिर आपकी काम करने की पोजीशन बिगड़ने लगी, सो लेट्स अज्यूम यू गेट प्लेस्ड एट अ बिग एमएनसी। आफ्टर दैट यू कांट से कि नहीं सर मैं तो लेट के ही काम करूंगा, मैं ऐसे सीधा बैठ के स्क्रीन के सामने नहीं कर सकता, राइट? एंड इवन इफ यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप और डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट्स बेटर इफ यू आर हेल्दी, you can do more. So keep following this. Apart from this, there comes nutrition. Even if you go to the gym or not, your body always needs nutrition. And by nutrition, I don't mean those nutraceuticals. I'm not saying that you require some kind of tablets. What I mean is you require a good balanced diet. मोमोज वगैरह कम खाओ, कैरेट स्पिनच ज्यादा खाओ। ठीक है, तो कैरेट्स खाने का ये मतलब नहीं है कि आप रोज गाजर का हलवा ही खा रहे हो, पर ओवरऑल एक बैलेंस डाइट आप जरूर रखो, विच इंक्लूड्स macronutrients as well as micronutrients. Then you can go for carrots, spinach, flax seeds, walnuts and other stuff. जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो आप सीजनल फ्रूट्स खाओ। ऐसा नहीं है कि आप कोल्ड स्टोरेज वाला ही खाना खा रहे हो या फिर हमेशा आप प्रिजर्व फूड ही खा रहे हो। पैकेज फूड इज नॉट ऑलवेज गुड, ट्राई टू अवॉइड इट and stick to whatever is locally available and which is present with minimal I would say minimal medications. Just a minute. This was about the presentation. Just to summarize again, what you can do whenever you're sitting in front of a laptop or computer. First thing, NPC. NPC, or in simple terms, it's called pencil push-ups. You have to use your pen or pencil, and then from an arm length, you have to bring it up closer till a point where it becomes blurry. This is what you can do 6 to 7 times a day easily. It won't take much of your time. Then to relieve digital eye strain, 20-20-20 rule, looking at something 20 feet or far away in every 20 minutes just for 20 seconds, which is refreshing your focus and reducing your eye strain. Then blinking and eye exercises in various gauges. You have 9 gauges of your vision that you can switch to. Then you can obviously blink more often whenever you're sitting in front of a computer screen. You can use palming method and you can roll your eyes. Now, the most important is ergonomics. You can adjust the height of your chair. You can set up a workstation for yourself where the monitor or the laptop is at the arm length from you and at your eye level itself. So you don't have to bend down. Also use night mode and blue light filters if available on your screens. Nowadays, most of the laptops or computers are already having blue light filters. There's also a common setting that you can go and set for the night mode. So whenever it turns, let's say after 7 p.m. or after 8 p.m., obviously it filters out the blue light and uses more warmer colors. Then maintain proper screen distance, as I mentioned, and your posture should be accurate. This will avoid your body fatigue. Last but not the least, nutrition for your eye health. You should have good diet to keep you healthy. So this was about the presentation part. Apart from this, many of you guys were asking various questions related to eyes. So I opened the panel for that. If anybody of you is facing any issue, अगर आप में से किसी को कोई भी परेशानी आ रही है, let me know in the chat box so that I can in the chat box so that I can help you that. Meanwhile, I'll switch to the myopia part. किसी ने पूछा था कि myopia please explain कर दो. So just a moment, I'll switch my presentation to that. Students, I can see nobody is having any questions.
Sir, can I ask you one question that I have been having from a long time with me? Can blue light glasses really help, or are they just marketing gimmick? ओके, सो सिंपल आंसर देता हूँ मैं इसका। मुझे कोई पावर नहीं है, मेरी आईज के अंदर कोई पावर नहीं है, बट स्टिल आई हैव द So the answer is yes, they are helpful, but it's not a marketing gimmick. Marketing gimmick is when you use the cheap lenses or the cheap quality of lenses. Basically, the Right. these lenses can be made up of various materials, and on top of it, n number of coatings can be present. So you have to always look out which best coating can I opt for. It depends as per your occupation, as per your needs. For example, if somebody who's more into driving is into Uber or something, then he requires glasses which avoids glare. And he also requires glasses which are good for night vision. But for somebody who's having, let's say, online classes on a daily basis, so better if you can switch to a good quality blue protection lenses. There's a difference between the quality. देर आर सम लेंसेज जिसके अंदर से ना लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, वो Right. चाइनीज लेंसेज होते हैं 99% ऑफ टाइम, बट देर आर Okay. विच फिल्टर आउट द ब्लू लाइट। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लू कलर देखना ही नहीं है, आपको ब्लू कलर फिल्टर कराना है ना, जो हार्मफुल एक स्पेक्ट्रम है सिर्फ वो नहीं रखना है। Hmm. If you can go for some good quality blue protective lenses. Can you suggest some brands to us, like from where we can get the blue light lenses for us? One of the best lenses are manufactured by Zeiss. Zeiss. Okay. तो किसी भी आप बेसिकली थर्ड पार्टी के लिए मत जाइए। मैं पर्सनली भी मैं Zeiss यूज करता हूँ। Rizal I'll consider that on second as per the quality index. So first is Zeiss, second is Rizal, later on n number of parties which can come up. But किसी भी थर्ड पार्टी पर जाने की बजाय better if you can go for Zeiss, because Zeiss is world leader and they're almost from space to the Oscar winning movies everywhere, they're considered the best. Right. All right. One more question that I have is that I can see that you hold a lot of experience with contact lenses also. Like personally, I'm not a contact lens person. I don't like wearing contact lenses. But yes, for students who wear contact lenses, I have a question that what are some of the mistakes that they should avoid to prevent eye infections while wearing contact lenses? There are various. There's somebody asking company name. Kindly share in chat box. I've already written Zeiss, Zeiss. Just a second. So you were asking about contact lenses and what we. What are the mistakes that students should avoid while to avoid any kind of infection while wearing contact lenses? So firstly, there are two types of contact lenses: soft contact lens and hard contact lenses. Usually, आप लोग जब मार्केट से लेंगे या फिर कहीं से भी ले रहे हैं 99% contact lenses. Hard contact lenses are only prescribed by the doctors for particular conditions. It's used for treatment, the hard contact lenses. 99% of you would only go for soft contact lens. So I'm sharing my insights for that one. So for soft contact lens, obviously, first thing, you cannot sleep in it. For sure, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पूरे पार्ट के अंदर हमारे पूरी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, ब्लड सप्लाई से क्या होता है? ब्लड सप्लाई इज बेसिकली सेंडिंग ऑक्सीजन टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। बट आपकी आई के अंदर जो कॉर्निया है, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ इट विच इज ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स. Then how is it getting the food? The food is obviously the oxygen. How is it getting food? It's getting food or the oxygen from the environment that we are in. So अगर मैं lid close कर देता हूँ, still I'm getting 30% of oxygen from my canthus, from the lateral endings. ठीक है, but if I wear contact lenses on top of it, I have a layer now, so the oxygen will be filtered. Then इसमें मैं सो भी गया, ये तो मैंने अपनी पूरी दुकान ही शटर ही डाउन कर दिया इसका।
तो इसलिए आप कभी भी कॉन्टेक्ट लेंसेज में सो नहीं सकते हो. ऑलवेज कीप योर आईज ओपन एट द टाइम ऑफ वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज. Secondly, contact lenses is all about hygiene. You have to keep your nails cut. Then you have to always wash your hands before and after using contact lenses, and you have to keep it in a proper hygienic case which comes along with it in a separate solution. But once you get used to it, it's like a 10-second task. You just use it and tuck, done. So it takes time. It's a habit building part, but obviously it's good for somebody who can opt for it. Thank you so much, sir. Before moving ahead and keeping the session bringing to close, I have a couple more questions to you. That you have been to Shark Tank India, as I have mentioned earlier also, and you were the first optometrist to be there at Shark Tank India. So I just wanted to understand how is your journey, and if any student running right now present with us on this call wanted to go to Shark Tank India, what are your advices, how they can make it to there, and what are the advantages that you have seen after being on the platform? So, sir. So advantages after being on the platform, first one, being present here, that good people like you invite me to educate the students on various topics. Secondly, journey, you know everything about it, but for the students, I can mention that I come from a very humble background where Falguni and others have helped me a lot in every phase of my journey. Now that I've been on Shark Tank, I can share a few insights to you that nothing is impossible for you. आप सब लोगों ने ये सुना होगा, एक और ठीक है, हर कोई यही बोलता है, बट ट्रुथ है कि अगर आप उसको करना चाहो, अगर आप किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हो, वो चाहे कोई भी चीज है, then obviously you will learn, either you get something out of it or you will be learning from it. In both of these conditions, there are higher chances of not getting failed. फेलियर तो वो है जो ट्राई नहीं किया, उसको ना तो कुछ सीखने को मिला, ना वो चीज कर पाया. सो आपके आई थिंक वीजीयू के अंदर भी ई सेल होगा या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का होगा. सो यू गाइस कैन आल्सो गो एंड आस्क फ्रॉम देम. मेरी भी जो जर्नी शुरू हुई थी, वो शुरू में हमने जैसे तैसे खुद से किया, कुछ साल तक किया, उसके बाद हमें पता चला कि यार गवर्नमेंट ग्रांट्स भी होती है. देन आई मेट फाल्गुनी एंड अदर्स. बट आपको मैं अभी डे वन से बता रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स. सो थिंक फॉर इनोवेटिव आइडियाज. और ये सब तभी करना जब आप कॉलेज में हो, आपका प्रेशर बहुत कम होता है. आपको क्या पढ़ाई करनी है ना, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है अभी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अभी पहले ये सोचना है पैसा कहाँ से आएगा, घर पे ये वो नहीं है. अभी आपकी जर्नी, आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है. बेटर अगर साथ साथ में आप कोई एक आइडिया पे काम करके देखो, या तो आप उससे सीख जाओगे, एक्सपीरियंस ले लोगे, जो आपकी प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करेगा. अगर आप नहीं सीख सके, हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुली हो जाओ, जो कि हाइयर चांसेस यहाँ पर सक्सेसफुल होने के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फंड्स देगी, मेंटरशिप आपको कॉलेज देगा, एंड इसके दम पर आप इसको फर्दर एक लार्ज स्केल बिजनेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली शार्क टैंक पे जाना, मतलब टीवी पे आना, वो सब में अलग मजा आता है. हमारे सीजन के बाद के सीजन थोड़े से डाउन है, बट स्टिल अगर कोई जाना चाहता है, सो एनुअली उनका एक फॉर्म रिलीज होता है where they invite the entrepreneurs to send in a pitch deck and their own video where demonstrating how they are going to pitch on the screen. तो वो सब आप अगर करके उनका फॉर्म फिल करके देते हो, तो obviously they'll invite you to studios, proper set होता है, वहाँ पर आप जाओ, शूट करो, and then someday you will be live on screen. Inspiring, sir. To the token of gratitude, I would like to ask you that one final advice that you have for the students in this entire topic that we came forward today and discussed about. So, one final advice that you have for our students. भूलना मत मैंने जो बताया है तुम सबको. Try to remember all the tips that I mentioned, and screen के आप edits मत बनो. ठीक है, earlier we were having very good life. Somebody was pointing out the cartoons also. अभी भी आप ट्राई कर सकते हो कि आप एक वर्क लाइफ बैलेंस रखो. मोर देन वर्क लाइफ बैलेंस, आई से स्क्रीन लाइफ बैलेंस रखो. थोड़ा टाइम आप स्क्रीन पे रहो, बट अपार्ट फ्रॉम इट हैव अ लाइफ टू. गो आउट, Right. enjoy with your friends and everybody, your colleagues,
कनेक्ट करो उन सबके साथ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, सोशलाइजिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, लोगों से मिलो। ये सब आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बाकी लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पर लगे हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पे या किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगे हैं। बेटर है अगर आप ये इंटरेक्शन भी सीख सको। सो कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ दिस। Thank you so much, sir. And students, I have already shared the social media links where you can connect with our social media platform as well as sir's social media platform. You can stay in touch with us, and also on YouTube we have shared this session live. So whenever you want to follow any advice and you are like, I'm not sure if I'm doing it right and correct, so you can watch that video, replay it as many number of times as you can. And now I finally open the house for the students. If any student have any questions, we have like last 15 minutes of the session. So yeah, please bring forward your questions and we'll be happy to take your questions. So any student have any questions? Somebody is writing amazing session. Thank you so much. Can I All read right. Yeah, please. Sorry, you were saying something? can I read the comments and directly reply to them? Yeah, sure, you can. So Miso is saying that there is itching and pain in the eyes. Miso, आप फटाफट किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, क्योंकि ये चेकअप करने के बाद ही वो आपको कुछ ना कुछ उस पर एडवाइस कर पाएगा, बट विद आई ड्रॉप्स इट कैन ऑब्वियसली बी रिलीव्ड. Then Ashish is waiting for myopia. Ashish, I have the screen right in front of you. So normal vision. So this is a diagram of eye. नॉर्मली मेरी आई कुछ ऐसे दिखती है सामने से, बट अगर आप सामने से पीछे तक क्रॉस सेक्शनल देखो, दैट इज कि आगे से पीछे तक क्या क्या पार्ट आता है. सो एज यू कैन सी, लाइट रेज एंटर होती है यहाँ कॉर्निया से प्यूपिल के थ्रू, लेंस के थ्रू होते हुए पीछे रेटिना के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करती है, दैट इज कॉल्ड फोविया और मैक्यूला. नाउ देर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, आइदर मेरी आईबॉल ज्यादा बड़ी हो गई है, या फिर मेरी ग्रोथ कुछ अलग रही है, या फिर मेरा लाइफस्टाइल कुछ अलग है, जिस वजह से इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ रेटिना, वो लाइट उससे पहले ही फोकस कर रही है, विच इज क्रिएटिंग अ डीफोकस, जो कि ब्लरी इमेज में रिजल्ट करता है. दैट इज कॉल्ड मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो अ रिजल्टेंट ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क. अगर आप नजदीक का काम ज्यादा कर रहे हो तो आपकी दूर की नजर कमजोर हो रही है. So this is about myopia. I hope it's clear now. Okay, great, thanks. Suggest me sir to get rid of heavy headache. अगर आपको headache हो रहा है screen usage के time पर, then follow my tips. If not, then consult a physician first. How can I reduce eye allergy? Use sunglasses when outdoors and try to avoid dust. Try to avoid some kind of pollution to an extent where you can. This is what you can do to reduce eye allergy. And if still if you are having some kind of allergy, visit an ophthalmologist or optometrist and they'll help you out. Convergence issue is different from myopia. Yes, Ashish, convergence issue is when both of your eyes are not working as a team, then they are not able to focus or merge at near. This is convergence issue. Whereas instead of this, myopia is when anything that you are seeing, it looks very blurry to you. That is because of the defocus. सर आइज कब चेक करवानी है? हर 6 महीने में आप चेक करा सकते हो, मतलब बेटर रहता है 6 महीने में अगर आप चेक कराओ तो कोई भी दिक्कत नहीं आती. आशीष, यस आई हैव ब्लर इशू. सो आशीष, फॉर योर ब्लरी इशू यू कैन विजिट एनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट. यू कैन इवन कम टू मी, बट आई एम सिटिंग इन गुड़गांव, सो थोड़ा दूर हो जाएगा. आप अपने नजदीक कहीं पर भी चेक कराओ. ऑब्वियसली देयर विल बी प्रिस्क्राइबिंग आइदर ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज फॉर यू. ओके, आप ऑलरेडी चश्मा लगा के साफ दिखता है आशीष. हाँ हाँ, तो लगाओ भाई, उसको चश्मे को लगाओ, नो इश्यू. Anybody else have any questions? Sir, sometimes starts coming out of eyes randomly. अगर स्क्रीन यूजेज के टाइम पे आ रहा है, that is to compensate for the evaporation that's happening. उसके अलावा अगर आ रहा है, so there might be issue with the drainage of the tears, which it's causing a clogged canal. So आप उसके लिए चेक करा सकते हो. ज्योति is having a doubt तो पूछो ज्योति. Then सर आप भाई शोरूम या कुछ भी बोल लो, वो गुड़गांव में है, आप गुड़गांव आ सकते हो. देव
Is that myopia solved with the exercise you have shared earlier? नहीं, myopia से सॉरी एक्सरसाइजेस से चश्मे का नंबर नहीं आता है, एक्सरसाइजेस से बीमारियां ठीक नहीं होती, एक्सरसाइजेस से आपकी आई बेटर रहती है, हेल्दी रहती है और आपको क्लियर दिखता है विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस नहीं. Can you suggest websites or resources where we can find genuine info about government grants for emerging startups? Viren, you can connect with me and I'll be sharing you there are multiple links, not a single website, but I'll share all the links with you. Viren, you can have my contact from your organizers. If we, Viren, I have shared it in the chat box already, and I'm sharing it again for you. So you can connect with sir over there. And students, one more thing that I would like to mention, that every now and then sir shares some advices regarding eye care and startups on his various social media platforms. So yeah, you can stay in touch with him, and all. Even if you consume his content, there is a lot that you can learn and stay updated about eye care and startups. So yeah, I have shared it once more. You can, if you have missed it anyhow, you can follow. मेरे फॉलोवर बढ़ने चाहिए आज, ठीक है दोस्तों. I hope everybody has received the message. I was just kidding यार, तुम लोग जाके कंप्लेन मत कर देना, दोबारा सेशन भी नहीं कराएंगे ये लोग. So if we have glasses with minimal power, should we try to avoid wearing glasses or wear them regularly? If first of all, get your glasses or your vision double checked first. If the power is same, then you should wear them no matter how minimal it is. How can I cure it? You cannot cure myopia. For example, अगर मेरा हाथ इस लेंथ का है तो मैं इसको छोटा नहीं करूंगा ना काट करके. अगर आपकी आईबॉल की लेंथ ऐसी है तो हम उसको छोटा नहीं कर सकते. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं. चश्मा है, कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं जो आप रात को पहने सुबह निकाले, पूरा दिन आपको क्लियर विजन दिखता है. दैट इज ऑर्थो के. देन देयर आर वेरियस सर्जरीज जो कि आपकी कॉर्निया को ऐसी शेप में ले आएंगे कि आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर प्लेस पर फोकस हो, जिसको बोलते हैं लेसिक. यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, आई थिंक आशीष आपके डाउट भी आंसर हैं. I guess most of the questions have been answered. Students, if you have any more questions, you can DM sir on social media platforms that I have already shared with you. Last question we will take now, sir, and then we'll put the session to end. If you can see any in the chat box, please answer that. I guess most of the questions are already answered. Perfect. Thank you Right. everybody. It has been helpful for you all. Just try to follow the tips as I mentioned. Right. So, ma'am. All right. So, thank you so very much, sir. My just a few more minutes we will take from you. One question that I can see is cylindrical power also cause headache. So, can you answer that question? You should wear those powers then. You should not avoid wearing glasses. And make sure the power is correct. Sir, I work almost my whole work with my PC. Sometimes my eyes be very red. Although I carry sunglasses, what would I do? Check for ventilation in the room. Sometimes there's no proper ventilation, so suffocation होती है, वो सब होता है. उस वजह से आपकी आई के ऊपर कंजक्टिवा एक लेयर होती है, वो इरिटेट हो जाती है. It is a nice interaction with you. Okay, thank you everybody. I hope I'll get to see all of you very soon. Yeah. Just a second, sir. There's a formal token of gratitude, a small virtual token of gratitude that the team has prepared for you. So they just wanted to present it to you. So I request my tech support team, Miss Pooja, to come forward and present the token of gratitude to Puneet, sir. Ma'am, over to you. All right, thank you so much, Falguni ma'am, for giving me this opportunity. And all right, so I'm Pooja Barwa and LMS and Technical Support Manager. So I would like to thank, first of all, Dr. Puneet. Your insights today have been truly eye-opening. And before we wrap up, I would like to present you with a virtue token of appreciation as a symbol of our gratitude for your time and valuable knowledge. Though digital, it carries immense appreciation for the impact you are making in healthcare innovation. And it was really a great, interaction with the
regarding the eyes, because I also required so many suggestion about my related to the my eyesight, because it is actually very weak, and I got so many exercises and things got to know about with this presentation only. So thank you so much, sir. And all right, all the learners, if you have any questions regarding this session, you can ask in the chat box, or you can unmute yourself about the discussion. Let me allow you all, because the session is gonna end. So if you have any query, any question, any doubt, you can ask the Dr. Puneet sir directly. You can unmute yourself. I gave the permission as well. I guess most of the session questions have already been taken, ma'am. So I think we should put the session to end. And thank you so very much, sir, for being here. And we would love to host you in person sometime on the campus very soon. So thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you so much, sir. एंड करते